हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक एंड वेलकम टू कम्युनिटी कोडर्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरा पीडब्ल्यूसी का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। सो वीडियो एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट चैनल के बारे में डेली अपडेट आपको मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा जो इंटरव्यू का प्रोसेस था मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो मुझे फ्राइडे को कॉल आया था कि आपको सैटरडे को इंटरव्यू देने आना है। तो मैं पुणे के ऑफिस में गया था, एयरवाड़ा फेस टू फेस इंटरव्यू था वो। वहाँ पे दो इंटरव्यू होने वाले थे, यल 1 और यल 2। सो फर्स्ट इंटरव्यू मेरा ऐसा था कि मिनिमम 30 मिनट्स का वो इंटरव्यू हुआ। उसके बाद में मुझे यल 2 इंटरव्यू देने के लिए कहा गया और मैं यल 2 इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया था मैंने। सो ये मेरी यल 1 और यल 2 की जर्नी थी। तो दोस्त इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, तो मैं वो क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। फर्स्टली मुझे यल 1 इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन पूछा गया। तो इंट्रोडक्शन मैंने ऐसा दिया कि हाय, माय नेम इज प्रतीक एंड आई एम अ जावा डेवलपर. I have 3.8 years of experience in software development. I have started my career as a software engineer, gaining hands-on experience on Java, Spring Boot, JUnit, Mockito, microservices, and SonarCube. I worked with the two organizations. In a TCS, I worked as a Java developer in a BFSI domain, and in a Cognizant also, I worked as a Java developer in a retail domain with the same skill sets. तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था। अगर आपको इंट्रोडक्शन चाहिए तो आप चार्ट जीपीटी करके भी आपके स्किल सेट के अनुसार आप आपका इंट्रोडक्शन क्रिएट कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे आया कि जावा 8 के फीचर्स बताओ। तो मैंने बोला कि लैम्बडा एक्सप्रेशन, फंक्शनल इंटरफेस, stream API, method reference, optional class, default and static method inside the interface, एंड डेट एंड टाइम एपीआई। सो ये बहुत सारे जावा 8 के फीचर्स थे। तो उन्होंने इसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन किया, फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, स्ट्रीम एपीआई क्यों यूज करते हैं, ऑप्शनल क्लास क्या होता है, और हम अगर स्टैटिक मेथड इनसाइड इंटरफेस लिख सकते हैं तो हम मेन मेथड भी इसके अंदर इंटरफेस के अंदर लिख सकते हैं क्या। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क्ड मी, that are kind of cross questions on the Java 8 features. तो अगर आपको ये सेम टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट किए हैं, उसमें ये सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए हैं। अगर आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक डाल दूंगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि उन्होंने एक स्ट्रिंग दी थी और ये स्ट्रिंग में से जो वॉवेल्स है हमें उनको डिस्प्ले करना था यूजिंग स्ट्रीम एपीआई। तो लेट्स से दिस इज द स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमें एक और स्ट्रिंग देनी पड़ेगी वॉवेल्स के लिए, जो रहेगी AEIOU। ओके। सो हम स्ट्रीम से पीआई में क्या करेंगे, इनपुट जो हमारा इनपुट है, डॉट कैरेक्टर्स डॉट मैप टू ऑब्जेक्ट सी car सी। सो ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हमारे पास आएंगे और हम इनको फिल्टर आउट करेंगे। जो भी कैरेक्टर आएगा वो कैरेक्टर वॉवेल में से जो भी इंडेक्स आएगा हमारे पास वो -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, आई होप यू गॉट द लॉजिक। मतलब जो कैरेक्टर हमारे पास आएगा वो अगर वॉवेल्स के अंदर से रहा तो वो कुछ इंडेक्स रिटर्न करेगा विच इज बिटवीन द लेंथ ऑफ दिस वॉवेल स्ट्रिंग। ओके, अगर वो माइनस वन रहा, सॉरी माई मिस्टेक, शुड बी नॉट इक्वल्स टू -1। अगर वो -1 रहा तो वो वॉवेल नहीं है, अगर वो नहीं रहा तो वो वॉवेल्स है। ओके, और हम इसको सिक्वेंशियली प्रिंट करेंगे। हम कलेक्ट करके भी कर सकते हैं और फॉर ईच लूप भी कर सकते हैं। मैं फॉर ईच लूप करूंगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन। अगर आप इस कोड को रन करोगे तो आपके पास सिर्फ वो कैरेक्टर्स आएंगे जो वॉवेल्स है।
A, I, A. So this kind of sequential characters that we are getting. Okay. So next question हमारे पास आता है कोडिंग स्निपेट. ओके, सो दिस इज द कोडिंग स्निपेट. इन्होंने क्या किया है, एक पेरेंट क्लास लिया है. पेरेंट क्लास के अंदर एक स्टैटिक ब्लॉक था, एक इंस्टेंस ब्लॉक था और एक कंस्ट्रक्टर मेथड थी. और उसके बाद स्टैटिक चाइल्ड में भी सेम था, स्टैटिक इंस्टेंस एंड चाइल्ड. यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो आउटपुट क्या आएगा? अगर आपको पता हो तो सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक ब्लॉक लोड होता है सिक्वेंशियली. तो अ, सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक पैरेंट प्रिंट होगा, उसके बाद स्टैटिक ब्लॉक चाइल्ड प्रिंट होगा. और हम जब हम जब इनहेरिटेंस में होते हैं तो पैरेंट की मेथड पहले कॉल होती है. तो सबसे पहले इंस्टेंस ब्लॉक ऑफ पैरेंट विल बी कॉल्ड. आफ्टर दैट द कंस्ट्रक्टर ऑफ पैरेंट विल बी कॉल्ड. और उसके बाद वो चाइल्ड तक आएगा और चाइल्ड में फिर उसका इंस्टेंस ब्लॉक रन करेगा और चाइल्ड ब्लॉक रन करेगा. सो द आउटपुट वुड बी सबसे पहले दो स्टैटिक ब्लॉक, उसके बाद इंस्टेंस एंड द कंस्ट्रक्टर ऑफ पैरेंट, एंड उसके बाद इंस्टेंस एंड द चाइल्ड ऑफ इंस्टेंस एंड द कंस्ट्रक्टर ऑफ अ चाइल्ड क्लास. सो ये मेरा कोडिंग स्निपेट था. उसके बाद क्वेश्चन आया हाउ टू रिजॉल्व साइक्लिक डिपेंडेंसी. सो अगर आपको साइक्लिक डिपेंडेंसी पता नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ. साइक्लिक डिपेंडेंसी इज अ डिपेंडेंसी वेयर one bean is dependent on another and another bean is also dependent on the first one. So let's take an example, bean 1 and bean 2. Bean 1 is dependent on a bean 2 and bean 2 is also dependent on bean 1. This throws one exception which is bean in creation exception. So to resolve this exception, we can give at the rate lazy on that bean, so that whenever that object is needed, then only that bean is created. Okay, so in this way, we can resolve the cyclic dependency. So this is the L1 interview. Coming to L2 round, L2 राउंड में भी पहला क्वेश्चन सेम ही था. टेल मी अबाउट योरसेल्फ. तो इंट्रोडक्शन हम सेम ही रखेंगे हर टाइम. Okay, so the next question is what is at the rate qualifier? At the rate qualifier is used when there are two bean of the same type. So whenever there are multiple bean of same type, then the compiler will get confused. So this is the ambiguous situation, and compiler will get confused which bean should be picked. So in this case, we will be using the at the rate qualifier. Also, we can use at the rate primary there. So if there is no any qualifier is given, then the primary annotated bean will be picked up first. Okay, so this is at the rate qualifier. Next question is Saga design pattern. So Saga design pattern is used in a microservice architecture to manage distributed transaction where a single business transaction span multiple services without using a global database transaction. Instead of Instead of one ACID transaction, Saga breaks the transaction into a sequence of local transactions, each handled by a service. If there is any failure occurs, the compensating transactions are executed to undo the previous steps. We can give the examples also. For an example, a shopping website, if there is any failure during the delivery, the refund should take place. So these are the rollback transactions. So this we can do by using a Saga design pattern. So there are two types in which we can implement the Saga design pattern. First is choreography based Saga. The services communicate via events. Each service listens to the event and publishes the new event. The second is orchestration based Saga. A Saga orchestrator controls the flow. The services execute the commands sent by the orchestrator. So this is the Saga design pattern. Next is a circuit breaker design pattern. So circuit breaker design pattern monitors the failure rate towards a service. If the threshold reaches, it will break the connection toward that microservice. It will allow some time to that microservice to recover itself, and after some time it will try to establish the connection so that it will make some calls toward it. If there is a success in these calls,
then it will establish the connection again. So there are three types of circuits there: open, close, and half open. So in the open circuit, we will be establishing the connection. In the closed circuit, we will be breaking the connection toward that microservice, and in a half open, we will try to give call toward that service, and after the success, we will be establishing the connection again. Okay, so this is the circuit breaker design pattern. What is a @transaction annotation? So @transaction annotation is used to manage database transactions. It ensures that the group of database operations are executed as a one unit of work. It ensures that either all the operations are succeed or all are rolled back if there is any exception occurs. This is the use of @transaction annotation. Next question is, if you want to break the transaction on a specific exception, what you will do? So there are some attributes in the @transaction. The attribute like rollback for. Rollback for is a attribute which performs the same kind of stuff, which is if we give exception dot class, so any exception occurs, it will roll back the transaction. So that's what we can do in this case. So the next question is, in the map, the key is integer and value is a string. I want to sort the keys to reverse in a reverse order. What will you do? Okay. So as you can see that I have implemented one hash map here. In that map, I have added some of the key and value pair, and I want these to be sorted based on the key, which is integer. Okay, so let's start. So here map dot entry set dot stream, then we can give the sorted directly on it, and then inside that comparator dot comparing int, and after that we can give map dot entry, which is of key and value should be of integer and string. Control V, double colon get key. Based on the key, it will get sorted, and I want this to be in a reverse order. So reverse is a method dot reversed. Okay, and after that we will be collecting it directly. Collect collectors dot to map collectors.toMap. So inside that, first we will be giving the what kind of key it should store. Then we can give map dot entry double colon get key. The same kind of value should be there. So we can just copy it. Control C, Control V. Here the would be get value. Okay. So after that, there is a merge function. Let's take a merge function. Merge function contains old and new, and old and new would give the old value, and we will be collecting the elements into a linked hash map. Semicolon, double colon new. Okay, so in this way we can collect it. Okay, so I'm collecting it in a map of integer comma string. Oh, sorry, integer comma string. Result would be there. Yeah, so this is result. We will be we would be printing the result at the end. So I hope you got the logic. So firstly we took the entry set, then stream, then we sorted. As we want the values to be in a reverse order, I took the comparator dot comparing int. Inside that I have passed the key. Okay, and I reversed it. After that, in a collect statement, I have given the collectors.toMap. First entry is of key, second entry should be of value. This is a merge function which takes care of a collision happens, and after that we will be collecting the results in a linked hash map. As you know that
hash map does not maintain the insertion order. So to make it possible, we are collecting the elements into a linked hash map. Okay, and after that we are printing the result. So let's see the result now. As you can see that based on the key, we have reversed the list here. Okay, so first is 4, 3, 2, and 1. Okay, so this is all about this question. Let's jump to the another question. Next question is transaction types. So there are multiple transaction types. So first is propagation, then isolation, read only, timeout, and the rollback. So these are some transaction types. Propagation defines that how transaction behave when one transaction is already exist. Isolation states that the data between visibility of the data between the concurrent transactions. Read only is used for the select purpose only to improve the performance. Timeout is for the maximum time that the transaction can run, and rollback is used whenever we want to roll back the transaction if any exception occurs. So these are the types of transactions. I hope you like the video. So if you want to stay connected, I have created one channel on the Telegram. You can join there. I will paste the link in the description box. Please let me know if you have any queries. We'll see you in the next video. Thank you.